Hello guys, welcome to our YouTube channel. I'll start with a brief introduction of my academic background. My name is Shikhar Agrawal and I passed my class 10th examination in 2018. Soon after that, I started preparing for IIT JEE. In March 2020, I gave my class 12th examination and I secured 99.6 percentage as a state rank 1 and an all India rank of 3. After that, I gave my JEE mains examination in September 2020 and I secured 99.94 percentile in it. And in the same month, September 2020, I gave my JEE advanced and I secured an all India rank of 247 and a state rank of 1 in Chhattisgarh. उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था as an electrical engineering program student. But in the year 2021, I switched my branch to CSE, and hence 2024 में, that is in 2024, I'll be graduating as a BTech in CSE from IIT Bombay. I've also been placed in the profile of a quantitative researcher at a multinational hedge fund, and I'll be soon joining my job after a few months in 2024. That is the current year itself. Okay, so that was all about myself. Uh, in this lecture series, we are going to start with a very important topic of class 11th mathematics, that is coordinate geometry. This lecture series will cater to all categories of students, meaning even if you're preparing for your school exams, that is for NCRT, even if you're preparing for your JEE mains, and if you're preparing for JEE advanced. So we will start building our concept from very basics, from very tiny basics, and we'll go into depth of most of the concepts that we will see throughout the course of coordinate geometry. So uh, let's start. Okay, so the first topic that we are going to start is coordinates, sign convention, and section formula. ये एक basic recap है of something that you would have seen in your class 10th. ठीक है, so let's start. सबसे पहले हम बात करेंगे about the Cartesian system. ठीक है. Now, what is this Cartesian system, or more precisely, the rectangular Cartesian system? So, in the Cartesian system, you have a reference point called the origin that is usually represented by 0, 0. There's something called the x-axis. This is the positive part of the x-axis. This is the negative part of the x-axis. And ये होता है हमारा positive y-axis, ये negative y-axis. Right? ये होता है complete y-axis. This is your complete x-axis. और उनका जो intersection point है, that is called the origin. That is usually represented by capital O. Now, कोई भी point जो two dimensional में है, so any point in two dimensions can be represented using two coordinates. So let's say this is a point P
It can be represented using two coordinates x and y. What do these coordinates represent? The x coordinate is the distance of this point from the y axis. So this is the x coordinate. The length is this x coordinate. Similarly, the distance of this point from the x axis is called its y coordinate, right? So this x coordinate is also called as abscissa, and this y coordinate is also called as the ordinate. This form the basis of the whole coordinate geometry. So these are the coordinates of the point P. So this pair, ordered pair x comma y, is the coordinate of the point P. All right. Now you can see that these two perpendicular lines, the x-axis and the y-axis, divide the two-dimensional plane, the plane of my laptop for example, into four parts. ठीक है, वो चार part कौन कौन से हैं? This is the first, this is the second, this is the third, and this is the fourth, right? So this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. ठीक है? So for any point that is present in the first quadrant, उसके coordinates किस type के होंगे? They'll have a form plus comma plus. What do I mean by plus comma plus? Because it lies in the positive part of the x-axis and positive part of the y-axis. Hence it will have the sign of the coordinates will be like this. Similarly, if you find a point P2, so let's call this point as P1, and we'll call this point as P2 since it is in the second quadrant. This will have a negative x coordinate, a positive y coordinate. For a point P3, it will have negative comma negative, and for a point P4, it will have positive comma negative. Right. So this is all about the sign convention that we follow, and this is all about the coordinates of a point. Right. Now, this is the rectangular Cartesian system. Why is it rectangular? This is rectangular because the Cartesian axis that we are considering, so this x and y axes are called Cartesian axis. Okay, so these axes are taken as perpendicular lines. You can see that the angle of intersection of these lines is 90 degree. मतलब ये दोनों lines जब perpendicular होते हैं, then the system is rectangular, and this is the whole basis of the rectangular Cartesian system. So this is something, ये एक basic recap है जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, maybe in class 10th, right? So let's move a little bit further. Let's talk about something else. Let's talk about distance between two points in Cartesian system. Okay, so what do we do here? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमको उनके बीच का डिस्टेंस बताना है. That is the question, right? So let's say we have this point P1, we have this point P2. इसके जो coordinates हैं वो x1 y1 है, and इसके जो coordinates हैं वो x2 y2 है. Okay, this is obviously the y-axis and the x-axis. I'm not labeling it. ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसका लेंथ बताना है. ठीक है, दैट इज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट? सो हाउ विल यू डू इट? दैट्स प्रिटी सिंपल. ठीक है, we will try to construct a right angle triangle like this. ठीक है, we'll try to construct a right angle triangle. You know that कि this length is what? y1 minus y2. ऐसा क्यों है? बिकॉज ये पूरा लेंथ y1 है और ये वाला जो लेंथ है ये y2 है. बिकॉज y2 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2 फ्रॉम द x एक्सिस. तो ये जो लेंथ है, दिस इज y2, राइट? तो ये भी जो लेंथ है, दिस इज ऑल्सो y2. हेंस जो ये वाली लेंथ है, दिस इज y1 minus y2, क्योंकि ओवरऑल जो लेंथ है दैट इज y1. सिमिलरली
ये जो डिस्टेंस है दिस इज x1 एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज x2, हेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस हुआ दैट इज दिस पार्ट, दिस इज x2 minus x1, right? Now you obviously know what the Pythagoras theorem says. You can consider this as point Q. So we can say in triangle P1 Q P2, the length of the hypotenuse is equal to the square root of the sum of the squares of the other two sides. So one of the sides is y1 minus y2, you're making a whole square, plus the other side is what? x2 minus x1 whole square. And this is what? P1 P2. This is the distance between 2 points in your Cartesian system or in your, for example, say in your coordinate geometry. ठीक है, तो ये जो distance है this is P1 P2. Okay, you can simply write it as y1 minus y2 का whole square plus x1 minus x2 का whole square, doesn't matter because it's anyways square हो रहा है उसका. So this is P1 P2. This is the distance between 2 points in coordinate geometry. और we will practice questions, तो आपको ये याद ही हो जाएगा if you already didn't know this. ठीक है, but this is a result that has to be memorized, right? ये आपको याद हो ही जाएगा and most probably बहुत लोगों को याद होगा भी. Okay, right. Now let's come to a very important formula in coordinate geometry that you will be using now and then. बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका. That is called as the section formula. ठीक है, I'm not written section formula because there are two formulas and hence I've written section formula, right? तो कौन से दो section formulas होते हैं? The first one is internal division and the second one is external division. तो पहले समझते हैं सेक्शन फॉर्मूला की नीड क्या है. ओके, सेक्शन फॉर्मूला किस पर्टिकुलर केस में अप्लाई होता है. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज let's start with our coordinate system. Okay, so this is our coordinate system. We have a line. Okay, right. So सिनेरियो क्या है? एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2. इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x2 y2. ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन सेज इज कि एक पॉइंट है S, उसके कोऑर्डिनेट्स तुमको निकालने हैं. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट दैट डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो m:n. तो इसका मतलब क्या है? m और n है क्या एक्चुअली? इसका मतलब बस ये है कि sp1 डिवाइडेड बाय sp2, जो ये लेंथ्स हैं इनका रेशियो इज इक्वल टू m/n. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज कि तुमको इस लाइन को P1 P2 वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है इन द रेशियो m:n using a point S. Now the question is what is the coordinate? Give me the coordinate of that point. तो तुमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है using this given information. So what we are going to do is uh, we are going to first drop perpendicular like this, drop a perpendicular like this, and from here as well. ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा Q एंड इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा R. ठीक है, नाउ टेल मी, let us look at triangles P1 QS and triangle SRP2.
ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स पे देखते हैं। ओके, तो व्हाट डू यू फाइंड, इसमें जो एक एंगल है, ये वाला एंगल है, वो 90 डिग्री है। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज यू हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एंड this angle is also equal to this angle. Why? If you know, if you remember your earlier classes, ये कौन से angle हैं? Corresponding angles है, right? So you can write angle P1 SQ is equal to angle SP2R, right? Why these are equal? Corresponding angles. तो triangle P1QS is similar to triangle SRP2। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होता है वो सेम होता है, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट इज P1Q डिवाइडेड बाय SR is equal to P1S divided by SP2 is equal to QS divided by RP2। ठीक है, by similarity, so you can write this by similarity। And now what is P1Q? अगर आप अच्छे से देखो तो P1Q is what? तो ये जो पूरा जो लेंथ है P1 तक का, x एक्सिस से P1 का लेंथ डिस्टेंस कितना है? दिस इज y1। सो दिस इज y1 माइनस q का डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से? y। यू गोइंग टू राइट लाइक दिस। एंड व्हाट इज SR? SR इज दिस, सो दैट इज y माइनस r का क्या है? y2। ठीक है, r का डिस्टेंस कितना है? y2। Similarly, you'll write for P1S। P1S, what is P1S? You don't know P1S का लेंथ कितना है, but you know P1S by SP2 कितना है? m is to n, given in the question, right? ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। This is what the ratio is. This is the ratio of the section formula। ठीक है, QS divided by RP2, तो QS कितना होगा बताओ? QS कितना होगा? X minus x1, राइट? क्यों x? क्यों? तो s का डिस्टेंस कितना है? x, और q का डिस्टेंस कितना है? x1। सो यू विल राइट व्हाट? x minus x1। ये टोटल डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस इज x1, सो यू आर लेफ्ट विद x minus x1। सिमिलरली यहाँ पे तुम लिखोगे क्या? x2 minus x, राइट? x2 minus x। p2 के लिए तुमने लिखा x2, और चूंकि r पॉइंट का डिस्टेंस x है तो यू आर गोइंग टू राइट x2 minus x। ठीक है, सो ये सेट ऑफ इक्वेशंस तुमको मिलेगी। सो लेट अस फर्स्ट पिक दिस पार्ट एंड देन विल पिक दिस पार्ट। ठीक है, सो व्हाट यू गेट इज, सो लेट्स फॉर्म इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलता है? ny1 minus ny is equal to my minus my2। Therefore you have ny1 plus my2 divided by m plus n, this is the y coordinate। If you pick equation 2, you have mx2 minus mx is equal to nx minus nx1। Therefore you have x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n। तो अच्छा लगे ये सिमेट्री के लिए, I'll change it to my2 plus ny1। रिजल्ट चेंज नहीं हुआ है, चेक कर लेना। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S that divides the line segment P1 P2 in the ratio m is to n।
तो जब मैं बोलता हूँ m/n तो समझ लेना कि m जो है वो p1 वाले साइड का रेशियो है और n जो है वो p2 वाले साइड का रेशियो है। दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा कि अगर m/n बोला गया है और लाइन सेगमेंट p1 p2 है तो m जो है वो हमेशा इस वाले साइड का होगा और n जो है वो इस वाले साइड का होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल डिवीजन, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, इट्स completely फाइन, जस्ट रिमेंबर that this is the coordinate of the point S that divides the line segment P1 P2 in the ratio m/n। बस इतना याद रखो, उसके अलावा अगर डेरिवेशन नहीं याद रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फटाफट से विल ऑल्सो सी एक्सटर्नल डिविजन, ठीक है। विल ऑल्सो सी एक्सटर्नल डिविजन। So I'll bring this thing right here, start looking at external division. Okay, so we are going to start looking at external division. तो external division में difference क्या होता है कि as the name suggest, पहले जो point S था, पहले जो point S था पहले जो पॉइंट एस था वो लाइन के बीच में हुआ करता था, राइट। सो अगर फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट है P1, ये तुम्हारा पॉइंट है P2, तो जो m/n बोलते थे उसमें जो पॉइंट S होता था वो बीच में होता था, यानी कि इंटरनल होता था, लाइन सेगमेंट के अंदर होता था, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज यू हैव टू you have a point. The point is still S, but the division is external. What does it mean? The point S lies on the line joining P1 P2, but वो segment P1 P2 के अंदर नहीं है, वो P1 P2 के बाहर है, right? Still यहाँ पे भी you're going to say that SP1 divided by SP2 is M by N, ठीक है। ये रेशियो स्टिल द जो नोटेशन होता था वो स्टिल वैसा ही है कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इनका जो रेशियो है वो स्टिल m/n है, ठीक है। एंड वी आर कंसीडरिंग द सेम नोटेशन, p1 का जो है वो x1 y1 है, p2 का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, और तुमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट s है। तो यहाँ पे यू कैन डू अ सिमिलर डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या करना होगा, तुमको वापस से सिमिलैरिटी लगानी होगी ट्राइंगल्स की, ठीक है। बस जो रेशियो लोगे ना, जब जो लेंस का रेशियो लोगे उसमें when you will write those lengths in terms of the coordinates of point P1 P2 and S, तब वहां पे थोड़ा सा प्लस माइनस का रिवर्जन होगा, लाइक रिवर्ट हो जाएंगे साइंस कुछ कुछ, ठीक है। तो इफ यू वांट टू डू द डेरिवेशन, I'll give you a basic hint or I'll just draw the triangles on which you have to apply, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये वाला ले लेना P1RS, और एक ट्रायंगल ये वाला ले लेना P2QS, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर सिमिलैरिटी लगाना। आई एम जस्ट राइटिंग द रिजल्ट, ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द रिजल्ट एंड विल सी। सो एक्स कोऑर्डिनेट को तुम लिखते हो mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट को तुम लिखते हो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। ये आता है रिजल्ट आफ्टर यू अप्लाई सिमिलैरिटी एंड डू द सेम सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तुमको अगर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला याद है, इंटरनल डिवीजन वाला, तो बस उसमें क्या करना है, रिप्लेस n विथ माइनस n, रिप्लेस n विथ
माइनस एन, बस इतना ही करना है, एंड यू विल हैव योर एक्सटर्नल फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस एन एक्स वन है और एम प्लस एन है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हो गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, बस माइनस हो गया है। ठीक है, सो दिस इज, आई एक्सपेक्ट दैट कि तुम लोग ये रिजल्ट को याद रखोगे। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट याद रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल डिवीजन के ये दो फॉर्मूलेस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, बोथ दोनों बहुत सिमिलर है, तो एक भी याद हो जाएगा, अदर इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में बस इतना याद रखो कि इंटरनल डिवीजन वाले में बस एक कोई भी रेशियो का साइन माइनस करना है, तो एन वाला जो है उसको प्लस की जगह माइनस कर देना है, एंड यू विल गेट योर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो यूजुअली प्रॉब्लम्स में यूज होती है, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। ठीक है, सो व्हाट दैट थिंग इज, coordinates of a point on a line joining two points। ठीक है, तो तुमको अगर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन, कि एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और एक पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, और तुमको एक पॉइंट लेना पड़ रहा है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से तुमको एक पॉइंट लेना पड़ रहा है इस लाइन में, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट एस, और तुमको उसके कोऑर्डिनेट्स मानने हैं। यू हैव टू अज्यूम x कॉमा y कोऑर्डिनेट ऑफ s। तुम क्या अज्यूम करोगे, ठीक है, क्या अज्यूम करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट कि चलो मान लेते हैं कि s के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y है। ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस दिक्कत ये है कि तुम वहां पे दो वेरिएबल अज्यूम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दो वेरिएबल अज्यूम कर रहे हो। हम हर बार कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो। ठीक है, तो कभी भी तुमको एक पॉइंट मानना है इस लाइन सेगमेंट P1 P2 के ऊपर, then you will say that the coordinate of that point S is like lambda x2 plus x1 divided by lambda plus 1, comma lambda y2 plus y1 divided by lambda plus 1। ठीक है, ये मानोगे, so you will say that let S be on P1 P2। ठीक है, ये पॉइंट डेफिनेटली इस सेगमेंट P1 P2 के अंदर लाई करता है, एंड इट divides the line joining P1 P2, the point S divides it in the ratio lambda is to 1। और ये तुमको क्लियरली दिख रहा होगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर मैं कहता हूँ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट P1 P2 इन द रेशियो लैम्डा एंड 1, तो तुम क्या बोलते, यू वुड हैव सेड दैट या दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आई एम सेइंग द सेम थिंग इन द रिवर्स फैशन, आई एम सेइंग दैट S एक पॉइंट है जो इस प्रकार का है, देन इट डिवाइड्स द लाइन P1 P2 इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव टू से, कि कभी भी तुमको एक पॉइंट मानना है अगर एक लाइन के ऊपर P1 P2 के ऊपर, ठीक है, अंदर, देन यू विल अज्यूम इट ऑफ दिस टाइप, यू आर गोइंग टू अज्यूम इट ऑफ दिस टाइप। ठीक है, क्यों, इसमें एक वेरिएबल कम हो गया यार तुम्हारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले तुम x एंड y मान रहे थे, तो तुम इसको x बोल रहे हो, अब इसको y बोल रहे हो, एंड नोट द फैक्ट दैट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है लैम्डा, x1 x2 एंड y1 y2 तो तुमको दिए हैं क्वेश्चन में, बिकॉज दोज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P1 P2, राइट। तो yeah, that was all about what I had to say in this particular video. In the next video we are going to start uh, delving more into details. This was just a basic recap. I'll see you guys in the next video. Bye bye.